चैप्टर 6 है प्रोसेस टू कम प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। सेक्शन है 63 से 93। अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस फॉर्म ऑफ समन्स इज प्रोवाइडेड? सेक्शन 63 फॉर्म ऑफ समन। सेक्शन 63 समन्स issued by court under BNSS must be all the above। समन जो इशू होगा उस पे क्या क्या लिखा होगा? समन में होगा ये राइटिंग होगा, एक डुप्लीकेट होगा। वारंट पे होता है कि एक ही कॉपी होता है और समन में होता है कि 2-3 कॉपी होता है। Signed by presiding officer of a court or any other person as directed by High Court. In encrypted or any other form of electronic communication, it shall bear the image of the seal of the court. Seal होना चाहिए उस पे। Which section of the BNSS deals with how summons are to be served? समन को कैसे सर्व किया जाएगा? सेक्शन 64 How are the summons served? Summons are served by above all by a police officer, by officer of the court। officer of the court चपरासी को भेज देते हैं। by any authorized public servant। किसी को भी कोर्ट बोल सकता है कि हाँ आप जो है समन सर्व कर दीजिए। प्रोवाइजो टू द सेक्शन 64 का एक का प्रोवाइजो बीइंग स्टेट द पुलिस स्टेशन और रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन ए रजिस्टर टू इंटर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर। मतलब पुलिस स्टेशन और रजिस्ट्रार इन द कोर्ट जो है वो क्या मेंटेन करेगा? एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर सच अदर डिटेल एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। मतलब कि आपसे जो होगा वो रजिस्ट्रार या पुलिस स्टेशन में जो होगा वो ये सब मेंटेन करेगा, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या कोई और डिटेल जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 हाउ कैन ए समन बी सर्व्ड? समन जो है वो सर्व्ड पर्सनली सर्व हो जाएगा और सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मेल या मैसेज भी कर देंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS लॉ ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉर्म्स एंड सोसाइटीज गिवन? सेक्शन 65 ये हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉर्म्स और सोसाइटी। कॉर्पोरेट बॉडी, फॉर्म्स और सोसाइटीज, ये सेक्शन 65 में समन सर्व किया जाएगा। सर्विस ऑफ समन्स ऑन द कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन में भी इफेक्टेड बाय सर्विंग एट इन डायरेक्टर को भेज दो, सेक्रेटरी को भेज दो या किसी भी रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दो, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या किसी भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी को भेज दो। सर्विस ऑफ समन्स ऑन फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग ऑन either any partner of the such firm or association by letter sent by registered post addressed to such partner. Under which section of the BNSS the summons may be served by leaving it with some adult member of the family of the concerned persons? सेक्शन 66 में है किसी भी एडल्ट मेंबर के साथ जो है समन सर्व किया जा सकता है। According to section 66 of the BNSS, when the person summoned cannot be found, the summon may be served adult male member of the family, adult member of the family या servant of the family। बी हो जाएगा। पहले था मेल मेंबर को, अब किसी भी एडल्ट मेंबर को कर सकते हैं। एडल्ट मेंबर यानी फीमेल मेंबर को भी समन सर्व किया जा सकता है। और सर्वेंट ऑफ द फैमिली, नौकर जो है वो फैमिली का पार्ट नहीं होता है, उसके लिए सर्वेंट को समन सर्व नहीं किया जाएगा। अंडर BNSS सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द समन्स कैन बी मेड इन विच सेक्शन? सी सेक्शन 67। अंडर BNSS सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स कैन बी मेड इन विच सेक्शन? सेक्शन 67। अंडर BNSS constituted service of summons can be made by affixing summons on the house। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उसको जो है कॉन्स्पिकुअस पार्ट, घर के दरवाजे पर चिपका के चल जाएगा समन आपको। अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNSS प्रोविजन रिगार्डिंग समन्स ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोवाइडेड? 68। गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर समन भेजना है तो ये किस में दिया हुआ है? 68 में। Where the person summoned is in active service of the government, the court issuing the summons shall ordinarily send it to duplicate the head of the office in which such person is employed. This is provided in section 68। section 68 में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसको सीनियर को भेज देंगे नोटिस, समन भेज देंगे, वो उसको बता देगा कि हाँ आपके नाम पे
समन आया. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन. बी, आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन में सेक्शन 69 में है. ये एक मजिस्ट्रेट है और ये दूसरा मजिस्ट्रेट है, तो ये लोकल मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को भेज देगा और वो इत्तला कर देगा वहां पे. When someone is to be served outside local limits of the jurisdiction, then someone is served by send the summon in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person resides. Send the summon directly to the person summoned. ये होगा, उसके मजिस्ट्रेट को भेज देंगे. Which section provides for the proof of service in case when serving officer is not present? सी, अगर सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट तो सेक्शन 70 में दिया गया है प्रूफ. एन एडिशनल method of service of summon on witness is provided under which section of the Sanhita? Section 71. Which section of the BNSS provide forms of warrant of arrest and duration? Section 72. Point out incorrect answer. The requisite of a valid warrant are it shall be a duplicate. वारंट जो है एक सिंगल कॉपी होता है, तो इसका कोई डुप्लीकेट फोटो कॉपी नहीं होता है. ये जो लिखा जाता है वही वारंट होता है. समन का 2-3 कॉपी होता है, लेकिन वारंट का एक ही कॉपी होता है. एन अरेस्ट वारंट इन ए क्रिमिनल केस शैल बी साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. वारंट साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ द अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? जब तक वो एग्जीक्यूट या कैंसिल ना किया जाए. until executed or cancelled by the issuing authority. Which section provides the power to direct security to be taken? B. Section 73, security to be taken. When a court issues a warrant for the arrest of a suspected person, it must ensure all the above. The number of sureties, amount in which sureties are bound at the time in which the accused person is required to attend the court. According to Section 74, a warrant of arrest shall be directed to either A or B, one or more police officer, any person or persons if immediate execution is required and no police officer is available. Which section of the BNSS provides that Chief Judicial Magistrate or a magistrate of first class may direct a warrant to any person within his local limit for arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or any person who is accused of a non-bailable offence and is evading arrest. Section 75. Which of the following statement is not true? A warrant directed to any police officer cannot be executed by any other police officer under Section 76 of the BNS. मतलब कि वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी भी दूसरे के साथ, दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी. Which section provides for notification of substance of warrant to the person arrested? B. मतलब वारंट को दिखा के और सामने वालों को एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ आपके नाम पे वारंट है. As provided by Section 77 of BNSS, the police officer or the other person executing a warrant of arrest is required to notify the substance thereof to person to be arrested and show the warrant to the person to be arrested. Notify करना है और show कर देना है जिसको अरेस्ट करना है. The police officer shall bring an arrested person before the court without any delay. This is the mandate of Section 78. Which of the following section of the BNSS provides for place of execution of warrant? A. एग्जीक्यूशन. वारंट का एग्जीक्यूशन भारत में कहीं भी किया जा सकता है जहां पे जुरिस्डिक्शन होगा भारत का. According to BNSS, a warrant of arrest may be executed at any place in India. When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may forward it to the any of these: executive magistrate in whose jurisdiction it is to be executed, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस. अगर लोकल लिमिट्स के बाहर है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, डीएसपी को भेज देंगे या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज देंगे. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द jurisdiction? Section 81. Which one of the following section provide for procedure and arrest of person against whom warrant is issued? Section 82. When a person is
arrested in section 82 का 1, the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest and the place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district and such officer of another district where the arrested person normally resides. Which one of the following section provides for proclamation of for the person absconding? Section 84. When warrant cannot be executed, the court may proceed under 84 and 85 of the BNSS. कुर्की जब्ती के लिए आगे कोर्ट प्रोसीड करेगा. If any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place at a specified time, not less than dash from the date of publishing of the such proclamation. 30 डेज का नोटिस देगा कि हाँ आप जो है अपियर हो जाइए, आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ था और आपको आप जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गए हैं. तो 30 डेज का आपको टाइम है, इसके अंदर अपियर हो जाइए, ना तो आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो जाएंगे. पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 84 of the BNSS is not less than 30 days. Valid proclamation under section 84 of the BNSS requires public reading of the proclamation in conspicuous place of town or village where the accused ordinarily resides. The proclamation under section 84 of BNSS can be issued against a person against whom a warrant has been issued. Thus, a proclamation can be issued against all of the above: accused offender, a surety, a witness. When a person against whom a proclamation is issued under section 84 of BNSS fails to appear, then in which of the following cases he can be declared as proclaimed offender? If person is accused of an offense punishable with 10 years or more, ये सही है. Offense punishable with imprisonment, life or death, ये भी सही है. Both A and B होगा. Penalty of non-appearance. In case where declaration has been made under section 84 का 1 में declaration में and section 84 का 4 of the BNSS pronouncing a person as proclaimed offender is provided under section 209 of the BNS. Under which section of the BNSS a person who is avoiding execution of a warrant may be proclaimed offender, proclaimed absconder? Section 84. In case of a suspect concealing himself to avoid arrest, the court can issue an order of proclamation. A warrant of arrest and a proclamation under section 84 of the BNSS were issued simultaneously and later a consequential order of attachment under section 85 was also issued. What is the legality of these orders? The order under section 84 is illegal and improper, violating the consequential order of attachment. In respect of which offense a person can be declared as proclaimed offender? Both A and B. The court may attach property of absconding accused under section 85 of the BNSS. Attachment of property अब हो जाएगा 85 में. Under section 85 का 1 the BNSS the court may order attachment of property of person absconding after proclamation. Proclamation है 84 और attachment of property है 85. Section 85. Under proviso to section 85 का 1 attachment of the property of the person absconding can be issued simultaneously with the issue of the proclamation. अगर कुछ मतलब कि भगोड़ा है तो उसके साथ साथ मतलब प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट दोनों एक साथ भी इशू किया जा सकता है. In order to compel appearance of a person who is absconding in spite of warrant of arrest being issued against him, his property may be ordered to be attached simultaneously with issuance of a proclamation, provided that the court is satisfied that such person is either condition A, about to dispose of the whole property in any part of his property, about to remove the whole or any part of the property from local jurisdiction. If the property to be attached is a debt or other movable property, the attachment shall be made by seizure, appointment of receiver, order in writing prohibiting
delivery of such property to a proclaimed person. If the property to be attached is immovable property, then the attachment shall be made by taking possession, appointment of receiver in writing, prohibiting the delivery. Which one of the following section of the BNSS provide for identification and attachment of the property? Section 86. The court can initiate the process of identification and attachment of property in written request of police officer not below the rank of superintendent of police or commissioner of police. Claims and objection to the property of attachment is provided under the which of the following section of the BNSS? 87 में क्लेम और ऑब्जेक्शन करना है. व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड within which claim objection to attachment must be preferred to be made under BNSS? 1 year. 1 साल के अंदर आपको क्लेम या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. In which court the claim or objection under section 87(1) is made? The court in which the order of attachment is issued, the court of chief judicial magistrate of the district when the property attached is outside the district. अगर outside district है तो chief judicial magistrate ही है, और जो कोर्ट इशू किया है उनके यहाँ क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. Which section deals with the release, sale or restoration of the attached property? Section 88. Release, sale or restoration. Release, sale or restoration. Section 88. Proclaimed person whose attachment has been attached can be claimed the property or sale proceeds on appearance with 2 years of attachment. What does the expression transit remand denote? Transit remand means it is taking out an accused by police from one state to another state. Which section of the BNSS provides for issue warrant in lieu of or in addition to summons? Section 90. Under which of the following circumstances a court can issue a warrant in lieu of or in addition to summons? Under any circumstance mentioned in section A, B or C. Which section of the BNSS provides for taking bond for appearance of person? Section 91. Bond for appearance of person. Which section of the BNSS provides for arrest on breach of bond of appearance? C. 92. Which section of BNSS provides for arrest on breach of bond of appearance? 92.